हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेश्वर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, एज वी नो देयर इज अ रिसेंट अपडेट्स फ्रॉम द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज FSSAI. And what is the update? The update is nothing but mandating of the registration number or even license number or any type of packaged, pre-packaged commodity. So that is the must thing. And be with me till the next to know all the concerns for the same, because there are typically 10 number of provisions made under this order. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज हम देखने वाले हैं द रिसेंट अपडेट फॉर द FSSAI एंड द अपडेट इज टिपिकली विद कंसर्न टू द मैंडेट फॉर FSSAI लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ये ऑर्डर क्या थी और उसके एग्जैक्टली पैमाने क्या थे, ये सब चीज़ हम देखेंगे। इसमें टिपिकली 10 नंबर के प्रोविजन है, तो क्या क्या है वो भी हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले देख लीजिए ऑर्डर। द ऑर्डर इशूड बाय RCD रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस डिवीजन डेटेड ऑन 8th June 2021. What is the subject? Mandating the mentioning of FSSAI license or registration number on receipts or invoice or cash memo or even bills by food businesses on sale of food products for the registration. तो इस हिसाब से ये ऑर्डर है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ 10 नंबर ऑफ प्रोविजंस फॉर द सेम। Now keep in mind, when we talk about the first provision is according to section 31. Section 31 is already there with concern to the registration of the different types of food businesses. So for this, the section 31 is there. Okay. Then the second provision is typically to trace out the complaint and to create a database. That is the most important one. और ये हम कब कर सकते हैं? When we have the database with concern to the stated number, which is the stated number of FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India. Before moving ahead, let me clear one thing very precisely. There are two types of things. One is the registration, second is the license. ठीक है, दोनों के लिए 14 नंबर का डिजिट होता है for the registration and for the license. If we have the number in terms of all the food commodity, then our database creation or traceability could be done in a fine manner. ठीक है, now हम बात करेंगे third point. Third point is typically FSSAI is already there for different packaged commodity, but different types of restaurants, even the shops like our mithai shops, caterers, retail shops, तो उनके लिए उनकी traceability नहीं होती थी. So that's why we require the FSSAI, so that if any type of complaint from their end, मतलब कुछ रेस्टोरेंट है मिठाई की है तो लोग उसको कंप्लेंट मेक कर सकते. ठीक है. Then fourth point, mandate to declare FSSAI number on cash receipts or bills. So that is given in the fourth point. So here we could say FSSAI number need to be mentioned on both the documents while we are going to trade purpose. But there is only one exception. The exception will be for the GST e-way bill and such other government documents which are system generated one. These are just the exceptions. Or apart from that, all invoice, all bills must have the 14-digit FSSAI license or registration number. ठीक है. Now the fifth point, access to consumers for food business operator. मतलब इस हिसाब से क्या, we got the information that who is the operator, who is the actual business person of that commodity, so that if anything is required, we could make a contact to him or even we could complain for the same. ठीक है. Now we take about the sixth point. Sixth point is typically with concern to the grievances, any type of complaint made. So here consumers can proceed to make complaint if they have the 14-digit number, maybe the registration or license. Fine. Then seventh one, it create awareness of Food Safety and Standard Authority of India. At the same time, we can identify both the things, which are, first one is the registered people or registered food business operator and second non-registered. तो हमें पता चलेगा कि कौन से registered है, कौन से non-registered है. That is one of the major advantage. Fine. Next, eighth one, find out traceability of the product with invoice itself. मतलब अब हमें उस पैकेज के उस लेबल का डिटेल इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. विद द हेल्प ऑफ इनवॉइस और इवन जस्ट द बैंक कैश मेमो, उस हिसाब से भी हम उसका ट्रेसेबिलिटी निकाल सकते हैं, दैट व्हेन द कंप्लेंट कुड बी डन और व्हाट इज द टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ डिफेक्ट कुछ है उसमें, तो उसका हम वहाँ पे ट्रेसेबिलिटी कर सकते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ आवर इनवॉइस. ठीक है. अब हम बात करेंगे नाइन्थ पॉइंट. हियर नो न्यू डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द FSSAI. जितना आपके पास आप पहले ही करते थे उस पे ही आपको वो मेंशन करना है. नो न्यू डॉक्यूमेंट इज मैंडेटेड फ्रॉम द
food authority point of view. Fine. Now 10th point, mention FSSAI license or registration number with effect from 1st October 2021. It is mandated for the all business operator, for the all food business operator, maybe food packaged commodity foods और इवन द प्री पैकेज्ड कमोडिटी और रेस्टोरेंट्स मॉल, सो सबके लिए ये अनिवार्य है. कब से? 1 अक्टूबर 2021 से सबके लिए ये अनिवार्य है. ठीक है. एंड इट इज दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. ठीक है. सो द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज नथिंग बट आवर CD एंड दीज आर अगेन यहाँ पे देखिए ये किस किस को इशू किया गया है. PPS to चेयरपर्सन ऑफ FSSAI, पर्सनल सेक्रेटरी टू CEO FSSAI एंड हेड टू RCD रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस डिवीजन. सो इन सबको ये इशू किया है. ओके फ्रेंड्स, आई थिंक टुडे सेशन इज डेफिनेटली यूजफुल टू एंड इंपरेटिव टू. आज हमने देखा है व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविजंस मेड अंडर द मैंडेटिंग ऑफ द लाइसेंस नंबर और इवन द रजिस्ट्रेशन नंबर. So definitely the thing is useful to you. If still you have any query, you could write me in the comment section. I will definitely help you out for the same. And with concern to same, I will try to update you every time with concern to FSSAI. Stay tuned for the next video. Thank you.